Yes, good morning, all the students. Today we have discussed about the crop rotation and the principles of crop rotation. Also, calculate the crop rotation intensity. First of all, this course is for BSc AG Honors Part Second, and the definitions of crop rotations. We should discuss about the definitions of crop rotation. It is process of growing different crops, yes, so uh, in a succession on a piece of land in specific period of time with an objective to get maximum profit from least investment without impairing the soil fertility, or we can say in हिंदी also कि फसल चक्र क्या है और इसको क्यों ज़रूरी है किसानों के लिए। मृदा के किसी निश्चित भाग अथवा क्षेत्र पर निश्चित समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, सस्य चक्र कहलाता है। अब ये कोई भी हम जो है इवेंट्स या सक्सेशन, इसको सिक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम भी बोलते हैं, और फसलों की अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ मृदा की उर्वरा शक्ति स्थिर बने रखने के लिए पृथक जो प्रयास सस्य चक्रों के सिद्धांत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है कुछ सिद्धांत हैं क्रॉप रोटेशन के, वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर्स जो प्रिंसिपल्स ऑफ द क्रॉप रोटेशन accepted by the Society of Agronomy. Now, first one is the crops with tap roots should be followed by those which have fibrous root system. We can say that झकड़ा और मूसले जड़ होती हैं उनमें सीक्वेंस होनी चाहिए, पर जो एक बार यदि आपने झकड़ा जड़ की फसलें ले ली तो दूसरे सीजन में आप टैप रूट यानी मूसला जड़ वाली फसलें। नंबर 2, लेग्यूमिनस क्रॉप शुड बी grown after non-leguminous crops. Third one is the more exhaustive crop should be followed by non-exhaustive crops. Exhaustive crops are those crops which take more nutrients, water from the soil itself, like potato, sugarcane should be followed by the oil seeds or less exhaustive crops. Number 4, selection of crops should be demand based, that is area specific. Number 5th one, the selection of crops should be problem based according to the socio-economic status of the farmers and soil and climatic conditions likewise. 6th one, the crop should be same family should not be grown in a succession. We should note that the same family crops should not take 2 or 3 times because they act like alternate host for insect pests and diseases. Number 7th, in an ideal crop rotation is that which provide maximum employment to the family and farm labor and machines. Now we know about the advantage of crop rotation. Why should we take crop rotation for the farmers field? An ideal crop rotation has the following advantage. कुछ लाभ जो जिसको हम कहेंगे किसान क्यों ले इनको जो है, तो नंबर 1 पे है इट इम्प्रूव द प्रोडक्शन, उपज प्राप्त ज़्यादा होती है फॉर द फार्मर्स बिना ही किसी इनपुट के, यानी इट कैन बी द एडजस्टमेंट ऑफ द क्रॉप्स. नंबर 2, एग्रीकल्चर ऑपरेशन कैन बी डन टाइमली फॉर ऑल द क्रॉप
because less competition. Number second, soil fertility is restored by the fixing at forage, right? Encouraging microbial activities, avoid accumulation of toxin like SCN in maize and you can say jawar, and maintain physicochemical properties of the soil. Like number third advantage, soil also protected from erosion, salinity and acidity. An ideal crop rotation helps in controlling insect pests, disease, etc. Number fifth, crop rotation control the permanent weeds of the field like कासनीन बरसीम एंड कस्कूटा यानी अमरबेल लूसरन में, तो इनको हम रोटेशन से ही इरेडिकेट कर सकते हैं फील्ड से. नंबर सिक्स, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द farm resources and inputs could be made. It's very important for the farmers itself that the resources available on the farm itself and the inputs minimum or maximum may be that can be utilized by the proper crop rotation. The next and last one, the farmer should get a better price for his produce because higher demands. Thank you. Today's finish the topic, and next we should discuss about the selection of the crops for a better crop rotation. Thank you.